A very cheerful morning to my dear students. As we know that we are doing the chapter number 14, light. In that we have discussed about light. Light is a form of energy which enables us to see the objects. Light always travels in a straight line. Then we discussed about the reflection of light. Reflection of light is the bouncing back of light. Then we discussed about the real images and the virtual images. Real images can be obtained on a screen, whereas virtual images cannot be obtained on a screen. Then I taught you about the concave and the convex mirror. Concave mirrors are the mirrors whose reflecting surface curved inwards, whereas convex mirror whose reflecting surface curved outward. Today we will carry forward this chapter and we will study about the formation of images in spherical mirror. First we will study about the images formed by a concave mirror by keeping at a different planes. But before we start with this topic, we should know some of the important terms related to the spherical mirror. The first term is center of curvature. It is the center of the sphere of which the mirror is a part. Means ये center होता है sphere का जिसका mirror हम part लेते हैं. ये हम C से donate करते हैं. The next is the second term is radius of curvature. It is the radius of the sphere of which the mirror is a part. इसे हम CP से donate करते हैं. Pole. It is the center of the spherical mirror. अब पूरा spherical mirror लूँ तो उसका अगर मैं center लूँगी, that is known as pole. Principal axis is the straight line passing through the center of the curvature and it is represented by XY. Principal focus. In a concave mirror, rays of the light parallel to the principal axis after reflection. Means जो rays पड़ रही हैं principal axis पर after reflection meet होती हैं एक point पर. That is known as principal focal. Means reflection के बाद जहाँ पर light rays मिलती हैं एक point पर उसे हम principal focus कहते हैं. इसे capital F से denote करते हैं. फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. तो ये रेडियस का 2f होता है. तो f इज इक्वल टू r बाय 2. सो दीज वर द टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. नाउ वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे. वी विल क्या करेंगे? वी विल पुट अ कॉन्केव मिरर ऑन द प्लेन सर्फेस. We will paste a sheet of chart paper on the cardboard. वो क्या serve करेगा as a screen. Now we will put a lighted candle at a distance of about 60 centimeter from the mirror, and we will try to focus the image on this screen by changing the position on the screen. The first one, you can see the image which is formed is very small, inverted and diminished. Diminished means small. Now in the second case, what we will do? We will move the candle closer to the mirror. अब हम observe करेंगे कि image कैसे बनेगी. Then what will happen? The image which is formed, जहाँ हमने क्या करा? Object को mirror के पास ले गए तो image क्या बनी? Inverted ही बनी है पर real बनेगी और magnified in nature. Means बड़ी बनेगी size में as compared to the first one. Now in third case, what we will do? और कैंडल को हम पास ले जाएंगे मिरर के, कॉन्केव मिरर के, एंड वी विल ऑब्जर्व द साइज ऑफ द इमेज. अब जो इमेज बन रही है इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. बहुत बड़ी इमेज बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द मिरर द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस. जब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जा रहे हैं तो इमेज का साइज क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है. नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर. To observe the image formed by a convex mirror, see this activity. We will use a convex mirror in place of a concave mirror. Similar, a candle will be used. What difference do you notice in the size of the image which is formed by this convex mirror? यहाँ पर जो इमेज बन रही है आप देखोगे डॉटेड लाइन से होगी. डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर बन रही है, एज इन द केस विद द प्लेन मिरर, जैसे प्लेन मिरर में होता है.
और इमेज क्या होगी, हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एज यू कैन सी इन द अबव डायग्राम, यहाँ पर जो इमेज बनी है क्या है, वर्चुअल बनी है और स्मॉलर देन द साइज इन ऑब्जेक्ट। Now we will study how to distinguish between a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror. A plane mirror जो बनाता है always forms virtual and erect images और जो होती हैं same size as that of the object. Whereas concave mirror forms virtual, erect and magnified image. यहाँ पर image बन रही है magnified, पर plane mirror में the image was of same size of the object. Now convex mirror forms virtual image, erect and diminished image. तो तीनों में virtual images बनती हैं, तीनों में erect images बनती हैं, पर plane mirror में it will be the same size of the object, whereas in concave mirror it will be a magnified image, and whereas in convex mirror it will be a diminished image. That's the difference between the three mirrors. Now we will study about the uses of the different kinds of mirror. We know the use of the plane mirror, which is used as a looking glass. Concave mirror are used in reflectors in the headlights of automobile. They are even used for the shaving mirrors also. Now convex mirror can be used as a to view the much larger area than would be possible with a plane mirror. So the image is smaller in size and erect. कहाँ पर यूज इन, दे आर यूज एज अ रेयर व्यू और साइड व्यू मिरर्स इन कार्स एंड स्कूटर्स. So these were the uses of different kinds of mirrors. Our next topic is lens. What is lens? A lens is a piece of a transparent material which has one or two spherical surfaces. That is a transparent material having two spherical surfaces. When the light passes through the lens, they change the path of the light rays on the surface of the lens in different condition, which is a refraction of light that you will study in the higher classes. Reflection of light जो होता था वो सेम मीडियम में होता है, दोनों मीडियम सेम रहेंगे, पर रिफ्रैक्शन में मीडियम्स चेंज होते हैं. Basically, there are two type of lenses that we will study, the convex lens and a concave lens. What exactly a convex lens is? Convex lens क्या होता है? It is thicker in the middle than at the edges, whereas concave lens is the lens which is thinner in the middle and thicker at the edges. Convex lens क्या होगा? Thick होगा middle में और thin होगा edges पर, whereas concave lens क्या होगा? Just opposite होगा, thinner in the middle and thicker at the edges. One more thing between the two lenses is that convex lens always converges the rays of light. मीन्स उसमें जो रेज ऑफ लाइट आती हैं एक पॉइंट पर मीट करती हैं, वेराज कॉन्केव लेंस में क्या होता है, दीज आर द डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग क्या लेंस कौन से होते हैं, इट डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मीन्स लाइट एक पॉइंट से निकल कर दूसरी जगह जाएगी, एज यू कैन सी इन द फिगर. कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग वन एंड अ concave lens is a diverging one. Now we will study about the formation of images in convex lens. What we will do, we will take a convex lens, place it in plane surface and put a lighted candle in front of it, same as we have taken in the mirror, about a distance of 60 centimeter. Now we will change the position of the screen and observe where the image is formed. From the ray diagram you can see images real, inverted and smaller in size of the object. As shown in the figure, क्या बन रही है, इमेज छोटी बन रही है, inverted बनेगी और smaller in size in the object. When it is placed behind the 2f, twice of the focal length के जब हम पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो कहाँ बन रही है, between the focus and the twice of focal length के बीच में इमेज बन रही है. अब क्या करेंगे, now bring the candle closer to the lens. अब क्या करा, हमने कैंडल को बिटवीन 2f एंड f के बीच में रखा, तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड 2f बनी. और अब इमेज जो बनेगी इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन वी हैव मूव इट क्लोजर टू द लेंस. Now in the third case we will bring the lighted candle further closer to the lens. Now the image will be virtual, erect and magnified. अब क्या होगी, इमेज वर्चुअल बनेगी
रियल ना बन के, और मैग्नीफाइड बड़ी बनेगी एंड इट विल बी अ स्ट्रेट वन. So what do we observe from this activity? When the object is moved closer to the lens, the size of the image increases. Now the last topic is the formation of images in a concave lens. We will observe how the image is formed in a concave lens. Similar way, we will place the concave lens in a stand and we will put a lighted candle in front of it. Now change the position of the screen and the object with respect to the lens and we will observe where the image is formed. From the ray diagram, the image formed by the concave lens is erect, virtual and diminished. यहाँ पर जो image बन रही है जब object को behind the focus रखा, it is formed between the focus and the pole and it is virtual and diminished. And the rays are the diverging one. Therefore, no matter where the object is placed, a diverging lens, that is a concave lens, will always form virtual, erect and diminished image. Three things. It will be virtual, erect and diminished. Let's study the difference between a convex lens and a concave lens. The first, we know that the convex lens is thicker in the middle and tapering at the edges, whereas concave lens is just the opposite. It is thicker at the edges and thinner in the middle. Convex lens is a converging lens and a concave lens is a diverging lens. In convex lens, images are generally real and inverted, whereas in concave lens, images जो बनेंगी वो कैसी होंगी? Virtual और erect होंगी. And when we are placing the object between the focus and the center of the lens, जो इमेज कॉन्वेक्स लेंस में बन रही है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड है, पर कॉन्केव लेंस में क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है, बड़ी ना होके छोटी होगी, स्मॉलर इन साइज. The last topic is white light consists of 7 colors. You all must have noticed the rainbow in the sky after heavy rain. It is formed when the white light from the sun passes through tiny prism-like water droplets. जो वाटर ड्रॉपलेट्स आफ्टर रेन रह जाते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और जब सन की रेज उनके ऊपर पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कलर, विच इज़ नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. What is dispersion of light? It is the phenomena of splitting the white light into several different components color is called as dispersion of light. And we see the 7 colors which is formed, which is known as the spectrum of white light. वो जो 7 colors बनते हैं Vibgyor, that is known as spectrum of white light. So since white light consists of 7 colors, अब हम क्या करें? इन 7 कलर्स को जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? वाइट लाइट मिलना चाहिए. ये जो फिनोमेना था, सर आइजैक न्यूटन हैज़ एक्सप्लेन दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द लाइट. और in order to prove this, what he has made? He made a disc on which the 7 colors of the rainbow were painted in equal section. You can see in the figure, when the disc was rotated, all the colors disappear and white colored appear, which shows that जब हम 7 colors को mix कर रहे हैं, we are again getting back the white color.